Hello, friends. Welcome. Namaskar. Jai Hind. We are talking about a very, very important brief discussion on modern Indian general studies history. The goal is to understand what is written through questions, how we have all information and content all around, but how to put it into answer at a specific time within the examination frame, which is definitely a skill and it cannot be done just like that. We are not saying that it takes a lot of ages, but definitely it takes a lot of hours of ages. So let's see and try to understand that a modern general studies history answer what it can show, what it is like. So the first question here is on our screens, and let's start. Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar, despite having divergent approaches and strategies, had common goals of amelioration of downtrodden. Wonderful question. Wonderful. Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar, despite having divergent approaches. So it is not focusing upon that they were thinking differently. It is only focusing upon the common goal of amelioration and downtrodden. So the answer must not focus on what divergent approaches they had, despite it is saying. So we had to focus on how, despite they were having common things. So Mahatma Gandhi, B.R. Ambedkar believed in Varna system, didn't believe in authority, and Vedas Varna believed in bottom-up approach reformation, believed in top-down positive discrimination. So same trap had been there, which examiner laid down, and the candidate is completely trapped in the divergence. And then later on, their goal of emancipation or empowerment of the downtrodden, Pune Pact of 932, MK Youth supported temple entry movement, Gandhi ji supported, B.R. Ambedkar established Bahishkrit Karni Sabha among other Dalit. Thus, their way were different. Reformation within a new society, whereas B.R. Ambedkar worked on polity, both advocated dignity, upliftment, downtrodden in society. लेकिन अगर मैं कहता हूं इसकी जगह, rather than taking up their divergent approaches in a tabular format, if I would have taken that how Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar, they were product of their own times, but they were having a great and a deep understanding of the Indian society, culture, and civilization. They both believed in emancipation of masses, and therefore Gandhiji believed that political empowerment of Indians through independence and constitution will bring them happiness and also will bring them freedom. Freedom of opportunity, freedom of thought and expression. Whereas Dr. Ambedkar believed that he also believed in the same idea, but he believed that separate electorates to the backward classes is definitely going to give them political emancipation, because without political emancipation, without political power, will be no social emancipation. On the other hand, Gandhiji believed that in religion also there must be equality of all, especially in Hinduism. That is why he believed that if there is untouchability in Hinduism, then Hinduism is going to die. Whereas Dr. Ambedkar believed that Hinduism itself cannot remove untouchability in perpetuity. That is why there must be open, declared, and explicit work for eradicating untouchability. So both are talking same thing in way, but their way is different. Similarly, both are standing for social justice. Gandhiji is not taking radical measures. Dr. Ambedkar is taking up radical measures. So, so rather than taking up the answer through this format, if given an opportunity, I will take it to the format of by talking about that both stood for masses in the following manner. A, for example, A, if I would take for upliftment of Dalits. So what he did for Dalits, that I would write. B, political emancipation of masses. What Gandhiji believed, that how political emancipation should be there, how Ambedkar believed should be there, that I will write. C, against Hinduism, means within Hinduism. So Gandhiji also believed that what Ambedkar is saying is correct. Ambedkar also believed what Gandhiji is saying is also correct, but both had a different way. D, once I have taken poverty, then I have taken emancipation of Dalits, then I have taken Hinduism, then one more element I would take, say for example, uh, say Satyagrah. Through Satyagraha also
both Gandhiji also did lot of satyagrah and Ambedkar also did satyagrah. So because the answer that you wrote here by divergent approach, because approach is not the key part of the answer, 50% of the time is wasted on that. The key part of the answer is दोनों का रास्ता अलग अलग था लेकिन दोनों की मंजिल एक थी। तो आप मंजिल एक पहले लेके आइए कि यस ये मंजिल थी, ये भी मंजिल थी, ये भी मंजिल थी, ये भी मंजिल थी। बस ये करना चाहिए था आपको। तो इसमें बात नहीं बनी, मतलब ये टेक्निकल आंसर हो गया ये। हाउ डिफिकल्ट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी? डिस्कस। महात्मा गांधी सेंट्रल फिगर विद द कांग्रेस लीडर्स इन नेशनल मूवमेंट। Rather than Congress leader, you should have written freedom fighters. Gandhi represented freedom movement. Congress was just one element of it, especially in the present context when we talk about understanding history in a broader perspective. What is the role of all elements who fought for Indian history or Indian independence? तो आप नहीं कह सकते, आप ये नहीं लिख सकते. There was a that was a hinge to which other movements attached to revolutionaries, tribal, peasant. ये बात बिल्कुल सही है. तो आप कहते, आप लिख सकते थे कि Mahatma Gandhi was not just an individual, it was a movement in itself. The movement was a rainbow which had different colors to it, providing some kind of inspiration to even revolutionaries, tribals, peasants, women, Dalit, and even all sections of society like Muslims, Parsis, Dalits, backward classes, whatever it is. India would have got independence as British got weak after World War II. Congress leaders, nationalism had entered the INA naval. There were other stalwarts like oh wow, my God! But the question rises: who commanded national appeal, pan-India settlement that we Gandhiji constructive work between non-cooperation, civil disobedience, communal harmony, inclusive participation of all. तो आपने अगेन इसको फिर से टेक्निकल बना दिया. जरूरत टेक्निकल बनाने की नहीं थी, आपको जितना पता था आपने सब कुछ लिख दिया यहाँ पर. तो हाउ डिफिकल्ट वुड हैव बीन, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट. जैसा मैंने कहा कि गांधी जी represented idea of taking divergent elements together. Gandhiji represented the idea of peace and harmony. He represented element of continuity and element of inspiring leadership. तो वो थोड़ा difficult होता if Gandhiji would not have been there. Gandhiji practiced the idea of Satyamev Jayate. He practiced religious harmony. He practiced political emancipation. He believed in Gram Swaraj. तो ये सारे एलिमेंट जो हमें एक व्यक्ति से प्राप्त होते हैं, they would have been difficult. But what you have taken the question literally, and then you have even envisioned the scenario after the Second World War, and you are talking about कि हाँ बाकी पटेल थे, सरदार थे, सुभाष चंद्र बोस थे. What about innumerable contributions of the क्रांतिकारीज and also leaders like, ऐसे तो लीडर हमारे वीर सावरकर भी थे, तो आपके उसमें तो आंसर में ही नहीं आते वो. तो ये जरा आंसर जो है ना, आंसर नहीं हुआ, ये जो है कुछ और ही हो गया. Gandhiji's constructive work between non-cooperation, civil disobedience made contribution in communal harmony. मतलब आपने इस आंसर को, मैं तो क्या बोलूं, मैं क्या बन गया ये. आंसर होना चाहिए था, लेकिन दिस इज राइट नाउ मिक्स वेजिटेबल. क्या खाते हैं आप? मिक्स वेजिटेबल पसंद है, तो ये मिक्स वेजिटेबल नहीं चाहिए थी. व्हाट इज योर ओपिनियन? सर फिर आप क्वेश्चन पढ़िए इसका, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहे थे. क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, पहले वाले क्वेश्चन के बारे में आपको क्या कहना है, अंबेडकर और गांधी के बारे में? हाँ, एक बार हाँ एक बार स्क्रॉल अप करिए सर. अंबेडकर गांधी. हाँ हाँ. तो उसमें सही है सर, जो मैंने लास्ट का जो पॉइंट लिखा है ना वो पहले होना चाहिए था. मतलब ये बता है इल्यूसिडेट, मतलब इसको बस बता देना है. इसको ज्यादा मतलब क्रिटिसाइज नहीं करना है, ना कि उसको कुछ एनालिसिस करना है. भाई मतलब कुछ नहीं करना है, वो ये कहना चाह रहा है कि मतलब गांधी हाँ अंबेडकर. मतलब असल सेम था, मतलब उनका एम सेम था, कॉमन गोल था हम्म. उसके डाउन टू के प्रति, लेकिन वो हैड डिफरेंट अप्रोच, डाइवर्जेंट अप्रोचेस. स्ट्रैटेजी डिफरेंट था. हाँ. तो तो हम लोग आप. मुझे पहले लिखना था कि पहले कॉमन गोल क्या था वो सामने हाँ लाते, फिर कैसे वो कॉमन गोल डिफरेंट अप्रोच से. हाँ, बस बस.
बिल्कुल। जो ऊपर वाला पॉइंट है वो नीचे से टैकल करते हैं, लास्ट में लिखते हैं पहला वाला जो पॉइंट था। हम्म। मैंने पहले पॉइंट लिखा कि डाइवर्जेंट अप्रोच कैसे था, हम्म। और गोल जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ था वैसे आंसर का ब्रेक करके लिख दीजिए, पहला यानी पॉइंट। आपने ओवरऑल, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, प्रेशर में आप जो है पेन स्टोक्स नहीं बन पाए। और सेकंड वाला आंसर का तो आप बताइए सर। सेकंड वाला आंसर तो लिखा हुआ है कि गांधी जी अगर नहीं होते तो कितना अरे डिफिकल्ट वो होता। तो यार, वो तो तो एक उसका तरीके से गूगली मारा है अब वो। अब इसमें है कि एक तो एक बता सकते हैं कि गांधी जी अगर नहीं होते तो बाकी और भी लीडर थे, लेकिन गांधी जी का एक ये कोई आंसर कंट्रीब्यूशन नहीं। था। नहीं, आपको एक बताना कंट्रीब्यूशन पड़ेगा था। कि गांधी जी नहीं होते, गांधी जी नहीं होते तो अहिंसा, सत्य, स्वराज, अंडरस्टैंडिंग इंडियन ऑफ। इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हो सर यहाँ पर? हाँ, मैं भी इंडियन इंडिपेंडेंस की मतलब इंडिया बात कर रहा हूँ। 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, वो कैसे अचीव होता, मतलब अचीवमेंट कैसे था वो नहीं होते तो? अरे तो भाई बात, अच्छा, हाउ डिफिकल्ट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि लेकिन नेशनल 1940 मूवमेंट में का पहुंच बात कर गया है रहे हैं। वो। नहीं, ये शब्द है ये। अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इज नेशनल मूवमेंट ओनली। हाउ यू इंटरप्रेट द क्वेश्चन, इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट। सो मैं यहाँ ये, भाई ब्रॉड आप लेके चलिए ना, आप नैरो क्यों लेंगे? महात्मा गांधी यदि नहीं होते तो अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हो सकता है, और डिफिकल्ट तो होता ही। हाउ डिफिकल्ट तो ऑलरेडी कह रहा है, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। दैट इज व्हाट वन शुड राइट, because to bring all different elements of sections of society on one platform, very difficult. दादा भाई नौरोजी ने 1905 और 6 के टाइम में वी वांट स्वराज लाइक ब्रिटिश कॉलोनीज की बात की थी, लेकिन हमें वो 1931 तक का टाइम लग गया रियल स्वराज को ग्रैस्प करने में। और रियल स्वराज का जो बात हुई, जो ऑब्जेक्टिविटी आई 1931 में, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ गांधी जी ऑन द नेशनल स्टेज। सो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. It is not to say that the other movements and other leaders have not contributed. They helped in polishing the spirit of independence, whether it was revolutionary activities, Bengali revolutionaries to Kakori conspiracy to Veer Savarkar to Subhash Chandra Bose. But then Gandhiji reflected all other elements. And similarly, in 1940s, after Second World War, British would have become weak, but then independence would have been, anarchy could have been more, anarchy could have been there. Gandhiji was the pillar of, harmonious construction. Gandhiji was the basic structure of Indian independence. That is what you have to write. He was the basic structure of Indian independence. ये लिखते ही नंबर ही ऊपर से टपकेंगे। और जहां आप इसको इमोशनली, टेक्निकली, गांधी, 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 गांधी ने ये किया, अरे ये तो होता नहीं, नॉन कॉपरेशन कौन करता, सीटीएम कौन करता, तिलक का नाम तो लिखा ही नहीं, तो नंबर नहीं आएगा भाई। इसका आंसर एक ही है, पहली लाइन में लिख देना चाहिए आपको कि इट वुड हैव बीन इक्वली डिफिकल्ट टू अचीव इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी जी, like the way today if we think about Indian constitution without basic structure. जैसी बात वैसी बात, समझे? बोलिए। अग्रीड सर, हाँ सर। यस। क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा, आंसर किसी टोन में देंगे, कहां से नंबर आएगा? अब क्या नहीं लेके आ गए हैं? अब सब कुछ तो लेके आ गए, ये चाहिए ही नहीं, आपने बहुत पढ़ लिया है। it would have been difficult for the it would have been difficult for the constituent assembly to for the constituent assembly to complete its historic task of drafting the constitution for independent India in just 3 years. But its experience gained with government of India in 1935 है। But its experience gained with government of India 1935, यही है इसका क्रक्स। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने सीधा चालू कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाज अ मेजर रिफॉर्म आफ्टर ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म 1990। नहीं नहीं नहीं, पहले आपको लिखना चाहिए था, drafting of Indian constitution was not just a technical task, it was a socio-economic political document inspired from the toils of Indian masses, reflected through different constitutional developments, and the last being the Government of India Act 1935. You have again made it very
Technical. Experience gained. How you will tangibly say experience gained? Issue of center versus state jurisdiction after 1937 elections. No. You should have written the Government of India Act 1935 reflected provincial autonomy. Provincial autonomy was acquired. Therefore, revenue, public works, finance, and many other important portfolios, they started working in right earnest, though governor was having all the powers. Then one line you can write about emergency provision. One line you can write about federal court, how federal court was doing justice. Not just federal court was there, federal court was doing justice also. Though it was colonial justice, somewhere you can write. Universal adult franchise was not there. Still communal electorates were there. Then you should write about three lists, center, state, and concurrent list, which came up. It was already reflecting there. Then you have RBI Act 1934. Then you had डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का ब्लूप्रिंट भी वहीं से निकल रहा था. देन इंडिया अडॉप्टिंग ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, प्राइम मिनिस्टर, executive. So some general those these kind of you could have written, but you went again mechanical. You looked for your memory and stopped your gray cells in a smart way. What is your opinion, Mr. Cam Scanner? सर रिगार्डिंग दिस आंसर, सर इसको पॉइंट में कैसे लिखेंगे? आपने जो बोला वो इट इज रिलेटेड टू पैराग्राफ, मतलब ऑब्जेक्टिविटी कैसे लाएंगे इसमें कि वो लिखा हुआ ऑब्जेक्टिविटी आप डिस्कस कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस गेन पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे इसको एक्सपीरियंस गेन? आप तो एक फिर फॉर 3 लाइन, हाँ, अबे 3 लाइन में इमोशनल बात लिख दे, 4 लाइन में, उसके बाद पॉइंट बना दे, फिर 2 लाइन लिख दे, बस खत्म. ये तो कर सकता है. ये सर बिकॉज सर जो ऑब्जेक्टिविटी चाहिए जो आंसर में, मतलब 1 2 3 4 अरे करके, चाहिए 1 2 3 4 तो आएगा ना, जो तो पहले आप लिखो ये एक्सपीरियंस। जो मैंने पहले बोला. आप लिखो सीधा, मैं तो लिखूंगा, जल्दी में लिखना है. पहली बात तो द एक्सपीरियंस गेन विद द गवर्नमेंट ऑफ 1930 एक्ट वाज इमेंस बिकॉज इट वाज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट व्हिच वर स्टार्टिंग फ्रॉम 1773, फुल स्टॉप. द फॉलोइंग द फॉलोइंग वाज लर्नड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. 1, सेंटर स्टेट रिलेशंस, उस पर 2 लाइन लिख दूंगा मैं. 2, crucial provisions like emergency where state must have control. 3, the division of the constitution having different schedules, for example schedule 1, schedule 5, schedule 4, schedule 5, schedule 6, which is talking about tribal areas. Okay, already British were treating them as external areas and the power was with the governor general. Then next, the scope for crucial institutions like RBI through RBI Act 1934, 35, whatever it is, if I'm putting up the date wrong. 6, milestone institutions like federal court. इतना में हो जाएगा बस 150 वर्ड में, और इससे ज्यादा करना क्या है? आपने क्या लिखा है भैया? असली नहीं चाहिए ना कॉन्स्टिट्यूट, हमें चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव. अब बताइए होगा कि नहीं होगा? यस सर, हाँ, यस सर, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर. बस फिर. सो इट वाज अ रियली animated discussion with a lot of ideas and thoughts. I hope it really helps you. Wishing you all success and see you in the next interaction. Have a broad smile, please. That is the best takeaway. And concluding remarks from you. So regarding questions, one should reread the question 2 times at least, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको उसी पर आंसर लिखना चाहिए, जो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन विद प्रैक्टिस इट विल बी इजियर. मतलब नेक्स्ट. तो एक वर्ड में आप कैसे समराइज करेंगे?
एक वर्ड, मोर कामनेस से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसी बात के साथ हम अंत करते हैं। जय हिंद। जय हिंद।